और इस इनपुट रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट लेने से ऑप एम्प की मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट ऑप एम्प में यूज नहीं करते हो तब ये चीज नहीं होगी। क्लियर है? सॉल्व ही नहीं होगी। नाउ अगली बात करते हैं। हमने वोल्टेज सोर्स की सिमिलरिटी देख ली, अमीटर की सिमिलरिटी देख ली, कंडक्टर की सिमिलरिटी देख ली, ऑप एम्प की सिमिलरिटी देखी। नाउ कम टू द सिमिलरिटी विद रिस्पेक्ट टू द बीजेटी। नाउ बीजेटी में अगर बात करें तो बीजेटी में अभी मैंने फिर बताया जो कॉमन बेस है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, उसका जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होता है। सिमिलरिटी में बात करूं, सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो जो कॉमन कलेक्टर है उसका जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो हमारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में किन बंदों का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, किन का इनफाइनाइट होता है, वो मैंने सारे कनेक्ट कर दिए और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे पेयर के साथ। ये ध्यान रखना कि किसके इंटरनल से 0 होते हैं, किसके इंटरनल इनफाइनाइट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा बड़ा ध्यान से, क्योंकि मैंने दोनों इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को सबको एक जगह क्या कर दिया है? कंबाइन कर दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक, अभी तक हमने यहाँ पर जो देखा है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स, एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स कैसे ड्रॉ होते हैं, इनकी क्या डेफिनेशन होती है, क्या वीआई ग्राफ होते हैं, इनके रेजिस्टेंस 0 वगैरह वगैरह सब निकाले। अब हमारा जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड कि आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी क्या होंगी। अब तक हमने जो है आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स की डेफिनेशन, वीआई ग्राफ, इंटरनल रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कैसे उनको रिप्रेजेंट करना चाहिए, वो दोनों देख लिया यहां तक, और कैसे हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स से ज्यादा एफिशिएंसी या उनसे कैसे मिनिमम लोडिंग इफेक्ट रखें, ये बातें हमने देख ली थी। अब जो हम नेक्स्ट देख रहे हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स। अब हम देखते हैं इनकी प्रॉपर्टी के बारे में, जो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नाउ प्रॉपर्टी 11th पॉइंट जो है हमारा वो है प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल एंड practical voltage source. Similarly, we will take the 11th point on the right hand side. So first property, let's say, what is that? Now we are having 12 volt battery. Similarly, I am having 12 volt battery also. Now the next diagram I will take, this is the first diagram. This is second diagram. Now I will take third diagram also. This is 12 volt. This is also 12 volt. Now, but this is now 6 volt. Now ध्यान दीजिएगा जरा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और एग्जाम में बहुत काम आएंगी आपके, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। नाउ फर्स्ट डायग्राम में अगर मैं देखूं, मैंने क्या करा है, दो आइडियल वोल्टेज सोर्स सेम मैग्नीट्यूड के सेम पोलैरिटी के कनेक्ट किए हुए हैं, सेम मैग्नीट्यूड सेम पोलैरिटी। बट इन द सेकंड डायग्राम आई हैव सेम मैग्नीट्यूड बैटरी बट आई एम कनेक्टिंग इन डिफरेंट पोलैरिटी, प्लस माइनस माइनस प्लस। इन द थर्ड डायग्राम व्हाट आई टेक, इन द थर्ड डायग्राम आई एम हैविंग two ideal voltage source of different magnitude। क्लियर है? तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं दो आइडियल वोल्टेज सोर्स ले रहा हूं या बैटरी ले रहा हूं, सेम मैग्नीट्यूड की ले रहा हूं और सेम पोलैरिटी की ले रहा हूं, तब क्या होगा? Now if you apply the KVL, I is what? 12 minus 12 and the internal resistance of both sources are 0 because they are ideal, so it is 0। क्लियर है? So it is 0. So when two ideal voltage source of same magnitude and same polarity are connected, it is valid. That means we can connect two ideal voltage source of same magnitude and same polarity. Clear है? In the second diagram, I take 12 volt battery with -2 plus and 12 volt battery with +2 minus। अब यहां पर अगर मैं किरचॉफ करंट लॉ, सॉरी ओम्स लॉ लगाता हूं तो I is what? 12 plus
12 divide by 0, so this tends to infinite. When there is the infinite current, there is a smoke, and when there is smoke, there is hazard. होगा क्या भाई? अगर अब आप ध्यान से सुनिएगा, अगर दो आइडियल वोल्टेज सोर्स आपने सेम मैग्नीट्यूड के बट डिफरेंट पोलैरिटी के लगा दिए, तो ये कॉन्फ़िगरेशन भी वैलिड नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या होगा, करंट बहुत ज्यादा होगी और ये सर्किट जल जाएगा। अब दूसरी थर्ड डायग्राम में अगर मैं बात करूंगा, तो थर्ड डायग्राम में क्या लिया है मैंने, आइडियल वोल्टेज सोर्स ही लिए बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड के लिए। यहां भी अगर मैं दूसरा लगा के देखता हूं, देखिए I is what 12 minus 6 divided by 0, that is infinite, क्लियर है। सो अब जरा मैं इसको कंक्लूजन करता हूं। टू आइडियल वोल्टेज सोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम पोलैरिटी कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल। टू आइडियल वोल्टेज सोर्स ऑफ सेम वोल्टेज or same magnitude and polarity can be connected in parallel, but two ideal voltage source of same magnitude, different polarity, two ideal voltage source of different magnitude cannot be connected in parallel. This is the property number first. Agree? So मैं इसको अभी लिखवाऊंगा। इसे दूसरी तरीके में, इसी से अगर मैं करंट सोर्स की बात करूं, अगर मैं करंट सोर्स की बात करूं, तो यहां पे ध्यान रखें कि इसके सिमिलर जो पॉइंट होगा 11 point on the current source, clear? So if you see current source, it is I1 of 1 ampere, similarly I2 of 2 ampere, ठीक है यहाँ तक। Similarly you can have different value also, different value also. There is I1 is 1 and I2 is 2, ठीक है यहाँ तक। सो अगर मैं यहाँ पर KCL लगाऊं, तो डायरेक्ट देखता हूँ 1 in 2 in, that is IT, the total current is 3 ampere, clear है। sorry I'm taking 1, so it is 2 ampere. In the second diagram I can take, this is second diagram, the answer is IT is 3 ampere. Now let's take third example also, where we will take the difference. I1 is 1 and I2 is 2, so your total current becomes 1 ampere, clear है। so अब जरा मैं कंक्लूजन दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। Two ideal voltage source of same magnitude and same polarity can be connected in parallel, but two ideal voltage source of same magnitude, different polarity, or two ideal voltage source of different magnitude cannot be connected in parallel. Agree? Now इसी की अगर सिमिलर बारे में बात करूं, two ideal current source of same magnitude, same direction, same magnitude, different direction, different magnitude, different direction can be connected in पैरेलल। एग्री? तो यहां पर जो पैरेलल की बात है वोल्टेज सोर्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द करंट सोर्स। तो मैं इसको लिखवा दे रहा हूं, इसकी क्या मीनिंग है तो उसको लिखिएगा ध्यान से ना। मैं एक ही साथ लिखवा रहा हूं, टू आइडियल वोल्टेज सोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी can be connected in parallel, but two ideal voltage source of same magnitude but different polarity, or two ideal voltage source of different magnitude and polarity cannot be connected in parallel. So this is the whole conclusion that we made in these three diagrams I have written। हमने इन तीनों का जो डायग्राम का कंक्लूजन है वो यहाँ लिख दिया। सेम चीज अगर मैं बात करूं तो मैं लिख रहा हूं करंट सोर्स के लिए। ध्यान रखिएगा जो मैंने
आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स की प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी लिखी है, बड़े काम की प्रॉपर्टी है। नाउ टू आइडियल करंट सोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट पोलैरिटी, same two ideal current source of same magnitude and same polarity or different magnitude and different polarity can be connected in parallel. So this is about the ideal voltage source property number 1, and this is about the ideal current source property number 1. Now moving to the next property, the B property. Now दो आइडियल वोल्टेज सोर्स जो हैं वो सेम मैग्नीट्यूड और सेम पोलैरिटी के होंगे तभी पैरेलल में कनेक्ट हो सकते हैं, बट टू प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स ऑफ different magnitude and polarity can be connected in parallel. Now, two practical voltage source of same magnitude and polarity and different magnitude and polarity can be connected in parallel. एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पर हम। अगर मैं बात करूं, एक मैं 12 वोल्ट की बैटरी ले रहा हूं, उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो है 1 ओम। सिमिलरली मैं अगर बात करूं टू प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड सेम पोलैरिटी, यस ये एक डायग्राम हो गया 1 ओम। अगर मैं डिफरेंट मैग्नीट्यूड का लेना चाहूं तो भी हो सकता है ये पॉसिबल, 12 वोल्ट 1 ओम एंड 6 वोल्ट 2। सो दीज डायग्राम यू हैव सीन इन योर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सो ये हो गई एक आइडियल वोल्टेज सोर्स की प्रॉपर्टी हो गई पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, और एक प्रॉपर्टी हो गई प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की विद रिस्पेक्ट टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ कम टू द practical current source. Now two practical current source of same magnitude and polarity, different magnitude and polarity can be connected in parallel. So this is same. तो मैं पहले एग्जांपल बना ले रहा हूं यहां पर। This is 1 ampere 100 ohm, 2 ampere 1000 ohm. So that can be connected in parallel. So अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूं। Two practical current source of same magnitude and polarity and different magnitude and polarity can be connected in parallel also. क्लियर है यहां तक? तो यानी कि ये दोनों प्रॉपर्टी लगभग यहाँ सेम ने जस्ट यहाँ पर इसके पैरेलल में लिखवाने के लिए ऐसा बता दिया है। सो अभी तक हमारे पास जो होंगे दो प्रॉपर्टी हो गई, किसकी? आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल एक आइडियल सोर्स की हो गई और दूसरी किसकी हो गई? प्रैक्टिकल सोर्स की हो गई। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। हमने अभी तक आइडियल और प्रैक्टिकल सोर्सेस की दो प्रॉपर्टी देख ली हैं। थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज सी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है वो देखते हैं। सपोज वी आर टेकिंग 112 वोल्ट बैटरी ऑफ 1 एम्पियर। Similarly, I am taking the second battery of 12 volt 1 ampere. Now, this is the resultant. Similarly, I am drawing a diagram for the current source also. So, we are having 1 ampere, and it is the total current. This is I of t. Now, जरा ध्यान से समझिएगा भाई। Two ideal voltage source of same magnitude and same polarity are connected in parallel
to increase the current rating. So ideal voltage source are connected in series, connected in parallel to increase the current rating, कैसे करंट रेटिंग बढ़ती है देख लेते हैं ना, देखते हैं भाई. So this is your the total current or the output current. If you apply the KCL, minus of 1 plus of IT equals to 0, at this point the KCL is this. So your IT is what? 2 ampere. But you know that for the parallel connection, if you apply the KVL, 12 minus 12 is equals to 0, and you are having this voltage V, then you again apply the KVL, that is 12 minus V equals to 0, so V equals to 12 volt. So we are having 12 volt but 2 ampere. So अगर आपको कहीं कनेक्शन में वोल्टेज सेम रखना है और करंट ज्यादा चाहिए, so you choose the parallel connection. Clear? So batteries or ideal voltage source are connected in parallel to increase the current rating. So it is clear. Now यहां पर देखते हैं ideal current source are connected in parallel to get resultant current. If you take again the KCL, minus of I plus of IT equals to 0, so your IT equals to 2 ampere. Now you can draw the diagram like that. So if you are having equivalent source of how much ampere? It is 2 ampere. So you can also write either current source are connected in parallel to get resultant current or equivalent current source. So this is the property number. Next, that is third property of ideal and practical current source. Now next property I am dealing. So up to here, the three property related with the current source and voltage source of ideal and practical, we are concerning about the just parallel combination. Now we are focusing on the series combination. So now if you are having V1 of 12 volt, V2 of again 12 volt, and this is the load or output voltage. So if you apply the KVL, 12 minus plus, so plus 12 volt minus of VL equals to 0, so VL equals to 24 volt. Now one thing और हम लोग और इसमें एक चीज देख लेते हैं. Both batteries are of 1 ampere. So we are having the batteries of 12 volt 1 ampere, 12 volt 1 ampere. Clear है? Both batteries rating are 12 volt and 1 ampere. So here we are having output voltage is 24 volt, but the current is 1 ampere because in series connection the current remains same. So when you connect the ideal voltage source in series, you are having more voltage rating, but current remains same. But when you are having ideal batteries in parallel, you are having same voltage but more current. So ideal voltage source or batteries are connected in series to increase the voltage rating. इसको भी लिख लेते हैं हम. मैं इसको यहां पर लिख दे रहा हूं क्योंकि यहां पे स्पेस कम है. Two ideal voltage source or batteries are connected in series to increase the voltage rating. So I hope यहाँ तक clear हो गई होगी बात. Rating. So two ideal voltage source or batteries are connected in series to increase the voltage rating. Now come to the series connection of the current source. Let's see क्या होता है यहाँ पर. This is a deep point now. I just take one example so that you can have a clear picture of it. So I'm having I1 is 5 ampere. This is I2 is 10 ampere.
and this is your 1 ohm, and you have to find the V0. This is the first diagram. Now this is, again I'm taking I1. This I1 is 5, this I2 is also 5, but this is 1 ohm, and you have to find the V0. Now जरा ध्यान से देखिएगा, ये दो मैंने डायग्राम लिए हैं, इन दोनों डायग्राम में आपका क्वेश्चन ये है, यू हैव टू फाइंड द V0, आउटपुट वोल्टेज आपको निकालना है। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बस उन्हें सॉल्व करने से मतलब है, वो जस्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। बहुत से बच्चे, अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर निकाल देंगे। 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5 एम्पियर, एंड 5 into 1 दैट इज 10 वोल्ट। कुछ बच्चे इसका आंसर निकालेंगे 5 into 1 दैट इज 5 वोल्ट। क्लियर है, दोनों के केस में आंसर 5 वोल्ट आ रहा है, बट ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दोनों डायग्राम सही हो। क्लियर है, अगर समझिएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अगर हम इस पॉइंट पर यहाँ केसीएल लगाए, तो केसीएल अगर लगाया जाए -5 + 10 = 0, so it is 5 = 0. That is not possible because KCL is violating. In this circuit, the KCL is violating. Now, in the next diagram, if you apply the KCL at this point, then you have -5 + 5 = 0. So 0 = 0. That is left hand side is equal to the right hand side. So here the KCL is valid. Here the KCL is valid. So KCL satisfies. Here I am writing the KCL violates. Violate. क्लियर है। अब ये जानना, किसी भी अगर सर्किट में आपके किरचॉफ लॉ का वायलेशन, उल्लंघन हो रहा है, अगर बात करें तो वो सर्किट रॉन्ग है, और उनका आंसर हमेशा आएगा C and D कैन नॉट बी डिटरमाइन या कैन नॉट बी फाइंड। लाइक दैट ऑप्शन आपको चूज करने पड़ेंगे। तो ये जो सर्किट है वो गलत है, क्योंकि इसमें किरचॉफ करंट लॉ का वायलेशन हो रहा है। बट ये जो सर्किट है ये बिल्कुल सही है। अगर ये सर्किट सही है तो इसमें करंट कितनी है, 5 एम्पियर है। 5 एम्पियर है तो वोल्टेज बराबर क्या होगा, I × R, 5 × 1 दैट इज 5 वोल्ट। एग्री? दोनों में आंसर 5 ही आ रहा है अगर कोई बंदा निकालने वाला होगा, बट ये सर्किट सही है और ये सर्किट गलत है। क्यों है, अब इसका जरा रीजन सुनिए। When two ideal current sources are connected in series, they must be of equal value, otherwise the KCL will violate. लिखते हैं इसको हम अपनी लैंग्वेज की फॉर्म में, क्या है इस प्रॉपर्टी का उद्देश्य। सो यहां पे लिखते हैं, two ideal current sources are connected. Two ideal sources are connected in series if I1 = I2, otherwise KCL will violate. एग्री? सो ये हो गई हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर हमें दो करंट सोर्स सीरीज में लगाने हैं तो वो सेम वैल्यू के होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। हमारा ये 4 प्रॉपर्टी हो गई रिलेटेड टू आइडियल एंड प्रैक्टिकल सोर्स। नाउ प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट, सो वी हैव A B C D, नाउ E, प्रॉपर्टी नंबर E, लेट्स सी क्या होगी। अब मैं और बात करूंगा, आगे ध्यान से देखिएगा क्योंकि प्रॉपर्टी बड़ी इंटरेस्टिंग है, और जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या मैं सॉल्व करूंगा, देन विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल वेरी वेरी इजीली। और अगर आप कन्वेंशन अप्रोच पे जाएंगे तो बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी पढ़ाई इसीलिए जाती है कि चीजें क्या हो जाए, इजी हो जाए। ठीक है, सो बढ़ते हैं आगे हम ना। आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड वी आर हैविंग ए करंट सोर्स इन पैरेलल। सो दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वी आर हैविंग ए आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल करंट सोर्स। ऑन द राइट हैंड साइड आई विल टेक, let's see what we are taking. So we are taking a ideal voltage source, this is V, and in series with a current source. Let's see क्या होता है। ठीक है, so in the left hand side we take an ideal voltage source and current source are connected in parallel. On the right hand side ideal voltage source and current source are connected in series. अब ध्यान से सुनिएगा, जब भी एक आइडियल वोल्टेज सोर्स और एक आइडियल करंट सोर्स जो है अगर पैरेलल में लगे हुए हैं, देन इट्स इक्विवेलेंट डायग्राम इज आइडियल वोल्टेज सोर्स, देन इट्स इक्विवेलेंट डायग्राम इज वोल्टेज सोर्स। एग्री? So this is your answer.
Now when your ideal voltage source and ideal current source are connected in series, then the equivalent diagram is current source. Equivalent diagram is current source. Agree? So मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब एक आइडियल वोल्टेज सोर्स और एक आइडियल करंट सोर्स जो है अगर पैरेलल में लगे देन उनका इक्विवेलेंट डायग्राम जो होगा वो वोल्टेज सोर्स होगा, और एक आइडियल करंट सोर्स और एक आइडियल वोल्टेज सोर्स जो है अगर सीरीज में लगे हैं देन उनका इक्विवेलेंट डायग्राम जो होगा वो करंट होगा, क्योंकि जब पैरेलल में जो है वो वोल्टेज सेम रहता है और सीरीज में क्या होता है सेम, दैट द रीजन बिहाइंड इट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, एफ। सो प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज आर एंड दिस इज प्रैक्टिकल आइडियल वोल्टेज सोर्स। सिमिलरली हियर आई एम टेकिंग आइडियल करंट सोर्स इन सीरीज विद ए रेजिस्टेंस। सो लेट्स सी क्या होता है। now, हमने करा क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में एक आइडियल वोल्टेज सोर्स के साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा रखा है और एक आइडियल करंट सोर्स है उसके साथ एक रेजिस्टेंस क्या रखा है, सीरीज में। जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एक आइडियल वोल्टेज सोर्स के साथ अगर कोई रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा है देन यू कैन निग्लेक्ट दैट रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द वोल्टेज कैलकुलेशन। Similarly, if an ideal current source is connected in series with a resistance, then you can neglect that resistance while calculating the current calculation. But when an ideal voltage source connected in parallel with a resistance, you cannot neglect that resistance, current and power calculation. When an ideal current source is connected in series with a resistance, this resistance cannot be neglected during the voltage and power calculation. ये बात मे भी आपको थोड़ी सी अभी अटपटी लगे, क्लियर ना हो, बट एक न्यूमेरिकल में अभी आगे लेने वाला हूं जब ये थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी कि मैं दिखाऊंगा कि जब एक आइडियल वोल्टेज सोर्स के साथ एक रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा होता है तो अगर मैं वोल्टेज की कैलकुलेशन करूंगा तो सर्किट पे के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आपने करंट और पावर की कैलकुलेशन करते समय ऐसा कर दिया देन यू विल गेट ए रॉन्ग आंसर। सिमिलरली अगर आप एक आइडियल करंट सोर्स के साथ रेजिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ है, करंट की कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा, बिल्कुल सही आंसर आएगा, बट आप ये रेजिस्टेंस वोल्टेज और पावर की कैलकुलेशन लेते समय भूल गए तो आपका आंसर 101% जो आएगा वो गलत आएगा। इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना है। इसी को दूसरी लैंग्वेज में जो एग्जाम वाले पूछते हैं वो ये पूछते हैं, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स के साथ कोई अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में है देन इट इज रिडंडेंट, दैट मींस यू कैन निग्लेक्ट दैट रेजिस्टेंस। सिमिलरली एक आइडियल करंट सोर्स के साथ अगर कोई रेजिस्टेंस सीरीज में है देन इट इज रिडंडेंट एंड यू कैन निग्लेक्ट दैट रेजिस्टेंस। इसी को अगर ऊपर वाली प्रॉपर्टी में इसी की लैंग्वेज को चेंज करो, जब एक आइडियल वोल्टेज सोर्स और एक आइडियल करंट सोर्स पैरेलल में होते देन द करंट सोर्स इज रिडंडेंट। व्हेन एन आइडियल करंट सोर्स एंड ए वोल्टेज सोर्स आर इन सीरीज देन द वोल्टेज सोर्स इज रिडंडेंट। इस तरीके की लैंग्वेज के साथ आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो ये हो गई आपकी प्रॉपर्टी रिलेटेड विद व्हाट, द आइडियल वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स एंड सो ऑन सो ऑन। अब अगर कुछ रह गया है तो हम देखते हैं कि आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स से रिलेटेड अगर कुछ वर्ड रह जाता है तब देखते हैं कि क्या रह गया। एक और लास्ट प्रॉपर्टी रह गई है आइडियल और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स से रिलेटेड, इसको कंक्लूड करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अपने डिपेंडेंट सोर्स, ठीक है। सो एक लास्ट प्रॉपर्टी रह गई जो मुझे याद आ रही है, हमने अभी तक ABCDEF तक प्रॉपर्टी जो भी कवर करी हूं। लेट्स सी नाउ लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, फॉर आइडियल वोल्टेज सोर्स वी कैन नॉट अप्लाई द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। वी कैन नॉट अप्लाई द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है ये हमारा भी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में मिल जाएगा आपके। बट फॉर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, source transformation is valid। क्लियर है? क्या है इसका मीनिंग मैं बता रहा हूं आपको। जो हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स है ये V और ये रहा, इसको मैं करंट सोर्स में नहीं कन्वर्ट कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? आई विल गिव यू द रीजन अगेन इन द
source transformation. This is not valid. That means for the ideal voltage source, you cannot apply the source transformation. And source transformation मैं हल्का सा बता दूं, source transformation is a technique which converts a practical voltage source into a practical current source or a practical current source into a practical voltage source. This is just theory about the source transformation. ये क्या है हम देखेंगे बाद में. But अगर कोई practical voltage source है, this is the practical voltage source and this is the ideal one. So this practical voltage source can be converted into a practical current source. This is valid for this. So this is I, this is R, but I is what? V by R. कैसे होगा वो देखेंगे बाद में. Similarly यहाँ पर भी अगर मैं बात लिखना चाहूँ, for ideal current source, we cannot apply the source transformation technique, but for practical current source, it is valid. सेम हम लोग बनाते हैं यहां पर भी एग्जांपल में. ये रहा हमारा एग्जांपल. Now this is I, this is V, but this is not valid because these are the representation of the ideal sources. Now if you want to apply on this, this is the practical current source having a resistance in parallel. This is I. So if you apply the source transformation technique, you are having a clear picture of this. So V is what? IR, and the same resistance is connected in series. So this is valid. So for ideal sources like ideal voltage source and current source, you cannot apply the source transformation technique. There is a problem. What is the problem? We will see the source transformation technique. But for the practical current source, either the voltage source or the current source, you can convert a practical voltage source into a current source and a practical current source into a practical voltage source. So this is about the property of ideal voltage source, current source, practical voltage source and voltage source. ये सारी प्रॉपर्टी खत्म हो गई. अब हम इस पर जो है, अभी हमारा शायद एक टॉपिक इसमें रह गया है. हम अभी बात करते हैं अपने डिपेंडेंट सोर्स के बारे में. तो देखते हैं डिपेंडेंट सोर्स क्या होते हैं. लेट्स सी. नाउ डिपेंडेंट source. Okay. So first thing, the dependent sources are represented by a special symbol that is called the diamond shaped box. For the voltage source, we use the diamond shaped box with plus minus polarity. For the current source, we will use diamond shaped box with arrowhead either upward or downward direction. Clear है? So the dependent sources are represented by a special symbol, that the diamond shaped box with plus minus polarity for the voltage source and with the direction for the current source. अब ये जो दो बंदे हैं, ये दो हैं डिफरेंट तरीके के भाई. क्लियर है? मैंने बताया था आपको पहले भी. नाउ ये वोल्टेज सोर्स है, तो दोनों के आगे आप वोल्टेज सोर्स लिख लीजिए. वोल्टेज सोर्स लिख लिया. नाउ एक बार वोल्टेज की वैल्यू जो है, वोल्टेज